हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकित इन जर्मनी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिफोर आई शो यू कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई शुड क्लियर यू बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस। पहला है, व्हाट इज एपीएस सर्टिफिकेट। तो बेसिकली क्या है एपीएस? इज अ एकेडमिक प्रूफ टेलर। ये बेसिकली जर्मन कॉन्सुलेट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जस्ट बिकॉज they want to verify all the student documents who are applying to Germany. Because the reason is, पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट जो है अपने फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जर्मनी में एंटर कर रहे थे, और जर्मन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि लेटर ऑन बाद में प्रोसेस जब स्टूडेंट्स जब है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो दे डोंट वांट टू हैव दैट। एंड इन ऑर्डर टू सॉर्ट इट आउट इन द एडवांस दे हैव इंट्रोड्यूस एपीएस सर्टिफिकेट। सेकंड इज, यार व्हाट इज द फीस ऑफ एपीएस सर्टिफिकेट। सो एपीएस की फीस है अराउंड 18,000 रुपीज, और ये नॉन रिफंडेबल है। सो मेक श्योर व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द प्रोसेस, enter the information correct as much as possible and be true to yourself, so that अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर की है तो आपको ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे तो रिफंड होंगे नहीं, और साथ में द एपीएस ऑफिसर्स विल हैव डिफिकल्टी इन कॉन्टैक्टिंग यू इफ दे वांट सम सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। सो मेक श्योर टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन। सो नाउ आई विल शो यू ऑन माय कंप्यूटर कि कैसे आपको एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। जाना है रिक्वायरमेंट्स में और वहाँ पे जाके जाना है चेकलिस्ट में, और दिस इज द वेबसाइट दैट विल कम। एंड आफ्टर दैट, फर्स्ट थिंग इज डाउनलोड दिस फॉर्म. This is a consent form stating that you are allowing the APS India to go through your data, and the data will be saved and so on. So just enter your name and your date of birth, and then make a cross here, and after that your the date, the place, and the signature, and send this form also with your all other documents. And all of the documents that you have to send is through a post. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 इंडिविजुअल प्रोसीजर्स हैं. एक है क्लास 12th का, फिर जेई का, देन है अंडर ग्रेजुएट में 2 सेमेस्टर्स, एंड देन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. सो क्लास 12th का मतलब है कि बेसिकली जस्ट यू कंप्लीट योर क्लास 12th एंड देन यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स इन जर्मनी. द सेम इज फॉर जेई. लाइक आपने जेई मेंस क्लियर कर दिया है तो सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स. एंड देन आपने अगर बैचलर्स कोर्स में एनरोल कर दिया है एंड आपके पास ऑलरेडी यू आर इन द सेकंड सेमेस्टर बेसिकली, देन यू हैव टू गो फॉर दिस चेकलिस्ट. एंड राइट नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं जर्मनी में, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे. एंड सो दिस इज द चेकलिस्ट. सो what is mentioned here, so register online at this website apsindia.de. ये आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करना है. So this is the consent form, and the application form is something that I will show you. Incomplete and incorrect information will invalidate your application. That means यार अगर आपने गलत information डाल रखी है, like contact of information या आपके percentage या university name, एक small spelling mistake will consider as incorrect information and your application will get rejected. And the fee is 18,000 Indian rupees. After that, also you can do either CC Avenue portal, that is the online way of payment, and other is a bank. You can go to the bank and ask them to transfer the money. So in both the cases, it is a non-refundable payment. Submit the required document, include the printed and the signed copy, signed application form via courier APS India. The address can be found on the website. I will show you the address where you have to submit it. But yes, submit the required documents, which is to be printed and signed application form. So documents verification will be conducted by APS. Only complete applications will be processed. So guys, यहाँ properly mentioned किया हुआ है यार, एक भी चीज missing है, it will be considered invalidate. On completion of the document verification, your online profile will be updated with verification result. Successful candidate will receive a digital APS certificate via email. So अपनी जो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, अब वो ईमेल आईडी देना. अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी मत देना, क्योंकि अगर आप जैसे अपने कॉलेज खत्म कर लिया है तो वो जो आपकी ईमेल आईडी है वो आफ्टर 6 months एक्सपायर हो जाएगी. सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. एनी हाउ, एपीएस का वैसे भी आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आपको रिप्लाई कर पाए, ड्यू टू इतने ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर. सो ट्राई टू अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स and make sure to you provide an email ID which you use daily. Successful candidate may apply to the student for the student visa through a BFS and so on. So okay, so that's fine. So this is the list of requirement document that you need to send when you are submitting the application. First is your printed and duly signed passport size photograph and not older than 6 months. So passport photograph चाहिए आपको जो कि not older than 6 months हो.
देन APS ट्रांसफर फी का रिसिप्ट चाहिए, जो कि जैसे जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे देन देयर विल बी अ रिसिप्ट दैट यू विल रिसीव after making the payment. Download it and print it out. Send a copy of Aadhaar card with linked mobile number. So guys, make sure जब आप उसको APS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है should be linked with the Aadhaar card. नहीं है तो do it. Copy of your passport front and the back. So this is also important, and make sure all the photocopies should be colored. Next is copy of 12th class mark sheet plus certificate. So except your if you have achieved some good certificates like you are in the merit list or आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट्स आपके रिलेटेड है 12th क्लास से वो जरूर सेंड करना. डू नॉट सेंड योर एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स बिकॉज दैट आर नॉट रिक्वायर्ड हियर. Basically, what you have performed academically, send those certificates. And then copy of your mark sheet of all semesters. अगर आप कॉलेज में हो, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास सारी मार्कशीट्स हैं फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक और 6th सेमेस्टर्स तक, then submit them plus your provisional certificate if you have that. If you haven't received your bachelor's degree till yet, then you can also submit your provisional certificate. A copy of your master's degree and transcript. So ये हमारे लिए applicable नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है if applicable, so it's not required. And the copy of your language certificate, German or English. So guys, there is no harm in sending more documents. अगर आपके इंग्लिश का IELTS है और साथ में जर्मन के लिए गोथे सर्टिफिकेट है, क्योंकि इंडिया में गोथे का ही एग्जाम होता है तो उसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, देन आपको वो भी सेंड कर सकते हो इसमें. So next is information leaflet of individual procedures, students of bachelor. Important information for candidates who have attended exchange programs at foreign universities. So I believe अगर आप इसके लिए eligible होते हो, so you can go through these requirements. अगर नहीं हो तो then you can just leave it. And guys, यहाँ पे specially mention है कि kindly do not send any original documents along with your application. So do not make this mistake because यहाँ से documents वापस नहीं आएंगे. They will destroy the copy also later because उसकी requirement है नहीं. So they will maybe keeping it as a digital copy, but so hard copies will be destroyed later on. So एक चीज़ और है, जैसे कि आप अपना अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस में कि आपको अपने प्रोफेसर का ईमेल आईडी देना है या टीचर का ईमेल आईडी देना है, जो भी है उस केस में आप उनका पर्सनल ईमेल आईडी मत देना बिकॉज इट विल नॉट हेल्प द EPS ऑफिसर्स टू ऑथेंटिकेट योर डॉक्यूमेंट. यू हैव प्रोवाइड देयर email domain ID basically, like for example ankitasahuja@met.com. So that MET is a university, so make sure कि वो उनकी यूनिवर्सिटी या स्कूल का डोमेन हो. Please note that that school have to reply to queries from the official email address. Gmail.com or similar domains are not accepted. So avoid, अगर आप जो contact person का information दे रहे हो तो use their institute email ID, not their personal email ID. Because the APS will not accept that email ID. And यहाँ पे इन्होंने जैसे आप बैंक का ट्रांसफर करते हो तो this is the account holder name and then the account number, the bank and the ARC code. So if you are going to make a payment through bank, then you can also use this information. It's also provided in this same document, which is a checklist document. So चलो अब start करते हैं कैसे apply करना है. So once this is done, then you can go to apply. So this is the login page. This is it looks like, and आपको यहाँ पे information provide करनी है, your username. So just upload your passport size photograph here and then start filling the form. So provide your email ID and after that your gender and then your nationality, your date of birth, place, and then yes, you are an Indian citizen. So your Aadhaar card number, your passport number, then your contact details, your address. After that, your city, region, Delhi, India, zip code. So provide the correct information. I'm just filling right now and as an example. Your 10th board name, that is CBSC. Your passing year 2019, for example. Your percentage 89%. Your 12th class board is CBSC. Your 12th class passing year is 2021. Your CBSE 12th center number. If you अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो उस पर सेंटर नंबर लिखा होगा, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो. नहीं है तो इट्स नॉट मैंडेटरी. आप ज़्यादा अच्छा है अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. So 12 percentage 70. If you have given JEE main exam main score, if you have that JEE mains का score and 12th and JEE advanced score, then do provide it. Else you can leave it. और जो डिप्लोमा बोर्ड कर रहे हैं, डिप्लोमा बोर्ड से हैं,
तो दे हैव टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज एंड ऑल। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट लॉगिन आईडी एंड स्टूडेंट पासवर्ड, तो प्रोवाइड करो इस चीज़ को अगर आपके पास है एक्सेस तो। देन अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू नेक्स्ट। हमारे केस में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कंप्लीट बैचलर्स एजुकेशन एंड बैचलर्स यूनिवर्सिटी नेम। सो आई कैन मेंशन राइट नाउ, फॉर एग्जांपल आपका आपका कॉलेज का नाम है एनआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन अब वो अगर यूपीटीयू यूनिवर्सिटी, जैसे अभी जो करंटली नोन एज गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, तो आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यहाँ पे जैसे मेंशन कर सकते हो, राइट इट इन फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी नेम गौतम बुद्धा, मेंशन अपना कॉलेज का नेम प्रॉपर फुल मेंशन करना है, बैचलर कौन से कोर्स में की है आपने, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल में की है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन कर सकते हो। And then bachelor duration 4 years or 3 years, that is you have to mention here. Bachelor's subject specialization electrical engineering hai, then I can mention that okay, subject was electrical engineering, sub specialization was also in electrical. So passing year is 2023 and percentage is also 70%, and then percentage if your gives you CGPA then enter CGPA. And अगर आपके पास एक्सेस है आपके स्टूडेंट लॉगिन आईडी का पासवर्ड का तो डू मेंशन इट, एंड योर बैचलर प्रोफेसर ईमेल आईडी यहाँ पे जैसे, सो व्हाटएवर इज योर प्रोफेसर ईमेल आईडी आप उसको मेंशन करो, डू नॉट मेंशन देयर जीमेल ईमेल आईडी, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। एपीएस विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड आपका जो प्रोसेस है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो प्रोवाइड द राइट ईमेल आईडी एंड डू इट फॉर्म द प्रोफेसर दैट APS India will contact you regarding the authentication process. And अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप यू कैन फिल दिस, एल्स यू कैन लीव इट ब्लैंक। एंड सेम हेयर, इफ यू आपके पास कोई और डिग्री भी है, BSc भी आपने शायद बेसिकली किया हो पहले, फिर आप बैचलर्स करने गए हो, तो आप यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस इन्फॉर्मेशन हेयर। एंड देन नेक्स्ट इज द टेस्ट AS डिटेल्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो लोग स्टूडेंट को लीक करना चाहते हैं जर्मनी में, उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। हमारे केस में हम मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिटेल्स। सो लैंग्वेज डिटेल्स में आपको यहाँ पे मेंशन करना है इंग्लिश या जर्मन। तो हमारे केस में हमारा अगर फॉर एग्जांपल कोर्स इज इन इंग्लिश, देन आई विल बी सिलेक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन आई विल बी सिलेक्टिंग IELTS, एंड देन आई विल मेंशन हियर माय IELTS बैंड फॉर एग्जांपल दिस। और अगर आपका कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है देन यू कैन एंटर जर्मन एंड यू कैन सिलेक्ट कहाँ से आपने दिया है। इंडिया में बेसिकली गोथे सर्टिफिकेशन है तो आप गोथे को सर्टिफिकेट दे के आप अपना ये मेंशन कर सकते हो कि आपका सर्टिफिकेशन लेवल A1 था और आपका स्कोर अराउंड 70% था। Then we go next, और यहाँ पे मेंशन है we recommend using CC Avenue payment option below for your payment. Manually wiring the verification fee will lengthen the verification process. Please note that if you cancel CC Avenue payment or choose to do manual transaction, your account will have to be activated manually by us. Manual activation will take place during office hours and will also result in longer verification process. So guys, इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि यार अगर आप ऑनलाइन करोगे तो इट्स विल बी हेल्पफुल टू देम ऑल्सो एंड आपका प्रोसेस जो है फास्टर रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट करो क्योंकि in that case they don't have to manually verify that a payment is done or not done. ऑनलाइन इज बेटर एंड उसी को प्रोसेस करो। तो आपको जो अभी जो लग रहा है टाइम, क्योंकि टाइम लग रहा है इनके पास बहुत बर्डन है अपना प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, आप इससे चाहे कि ऑनलाइन पेमेंट करो और जल्दी काम को खत्म करो इसके। सो आप APS के डॉक्यूमेंट में पेयर नेम इज यू कैन राइट योर नेम दैट यू आर पेइंग इट, एंड देन IFC कोड अगर आपके पास है, अगर ये ऑफलाइन का पेमेंट है देन आपसे ये सब मांगेगा, IFC कोड, अमाउंट एंड सो ऑन। हम CC Avenue सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली एंड देन we go and submit it, but right now I will not do submit because it will lead me to the bank or CC Avenue page, and if the payment is done then it won't help you because the information जो मैंने डाली है वो is not correct, but this is the process. So you have to enter this way only, and after that once you have done it then you will get a confirmation within 2 or 3 days stating that your payment has been verified or your payment has been confirmed, then you can do a login. So जो आपने username और जो password use किया था first time to create this account, this will be your login and the password. So guys, once you have made the payment, then you have to submit the document via post, and for that you can just go to home, contact us, and here they have mentioned you the location. Our location is gate number 3, DLTA complex and avenue. This is the mailing address only, no public dealings will be entertained. So do not go there and ask them what is the process, what is the status, they won't be able to answer it. So just mail the documents in the envelope, that's it.